Good evening, good evening. Good evening to all learners. Good evening to all learners. Very good evening, sir. Very good evening, sir. Registration कर दियो. Message box को जाई करी मझे क्लिक करके मात्र 5 जन करछंती. 10 जन पार्टिसिपेंट अछंती किंतु 5 जन मात्र रजिस्ट्रेशन करछंती. त माने जो माने करी ना जल्दी कर दियो टिके. So education and the training of rural women. अच्छा मते आज पचार थलो के मु क्लास को गला बेले लकी पचार थलो ना के लिप्सा. हेलो. Good evening, sir. Mu pacharthil. Good evening, sir. लिप्सा. Lipsa सुनो. Mahathi. Lipsa Mahathi, sir. दिनरे फोन करिवने मु सबले क्लास अफ थाए. Sorry, sir. अनर्स पिला माने पीजी अनर्स पिला पीजी पिला माने क्लास रे रेडी होछन ना सेतबेले दिनरे हम वी आर बिजी. Sorry, sir. इते आउटिंग काई दिन सब. Sir, actually, currently mu person bus re travel करछु, sir. तो सुनो जो क्वेश्चन पचार थला जे regarding exam during the COVID-19 period, the pending exam will commence in January. Towards January 15th. January 15th आड़को start हबो तो परीक्षा. Okay. Okay, sir. Fine, sir. Thank you, sir. Let us proceed. So bond करो, mute करो. So education and training of rural women. We know that all we are Indians belongs to a welfare country citizen. Means our democratic form of government. We are belongs to the citizen of our part IV. As part IV of the Indian Constitution states that India is a welfare country. In which respect we can state that India is a welfare country. जे चतुर्थ स्तंभ भारतर संविधान कहूची जे भारत होची गोटे जनमंगल राष्ट्र गण विश्वर बृहत्तम गणतंत्र राष्ट्र रा आमे होचंती सब नागरिक. So how India is a welfare country? How can we title India is a welfare country? If we achieve the maximum literacy rate. So if we eradicate the poverty, if we eradicate the unemployment, देशरे केही भोकिला बेकारी एवं अशिक्षित नथिबे एवं धनी दरिद्र मध्यरे पार्थक्य नथिबो तेबे जाईकरी आम देश को कहबा भारत होची गोटे राष्ट्र बा जनमंगल राष्ट्र बोली. So it is the primary focus that education is the backbone of a democracy. शिक्षा होची गणतंत्र राष्ट्र गोटे मेरुदंड. शिक्षा हला गणतंत्र राष्ट्र मेरुदंड. एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी. कारण शिक्षा मनुष्यर डिसिप्लिन लाइफ, मनुष्यर डिग्निटी, मनुष्यर तार समाजर देशर परिवारर एवं ग्रामर यार मर्यादा बढ़ाई थाए एवं देशर विकास क्षेत्र रे शिक्षित qualitative human resources helps a lot. As if we will compare with the Japanese the human resources and American, Britain, Australian human resources. पृथ्वी रे Japanese human resources plays one of the important dominant role all over the world. So सेही भली गणतंत्र को सुदृढ़ करबा पय हेले हमकु गुणात्मक नागरिक दरकार. क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्सेस दरकार. क्वालिटेटिव केमती हेबे जे वास्तव शिक्षा जदि समस्ते शिक्षित होई परिबे. किंतु आम देश रे देखा जाउची ड्रॉप आउट होई जाउची पिला माने ड्यू टू पॉवर्टी, starvation and poverty that leads to that they are drop out. कारण परिवार रा इनकम को वृद्धि करबा पई पिला माने जाई कि विभिन्न प्रकार घरोई काम होटेल मोटेल ढाबा मानकर जाई रोजगार करी परिवार को अर्थ जोगई थांती. बहुत मुख्यतः गरीब
those are living below the poverty line and scheduled caste, scheduled tribe peoples. The children are going to hotel, motel, dhaba and different house work fine. ये सब जगह से माने टेम्पोरारी नियुक्ति पाई रोजगार करिथांती एवं घरर आर्थिक सहायता को सहयोग करिथांती बोली से माने अनुभव करंती किंतु वास्तव रे पिलाटीर फ्यूचर अंधकार हे होची परिवार टी जानि पाना कारण परिवार होचंती illiterate, belongs to scheduled caste, scheduled tribe, maximum people are belongs to illiterate. So government always started giving scope, a scheme and implemented a different scheme during different time periods to increase the educational status of the country. So seti pai national policy on education, India's national policy on education during 1986 was outcome of a series of national consultation perceive education as a tool of empowerment of social justice, social सामाजिक न्याय 1986 मसीह जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो गठन होता जो थिरे आमर 10+ ताकू आसे कोठारी कमिशन 1986 10+2+3 पैटर्न आम देश रे अडॉप्ट करा जायथिला तेणु करी एई सब शिक्षा व्यवस्था आम देश रे हेई एबे मध्य नुवा शिक्षा व्यवस्था न्यू एजुकेशन पॉलिसी गोटे स्टार्ट होगा पय जाउची आम देश रे सारा समग्र देश रे सो स्कीम फॉर गर्ल्स एजुकेशन स्पेशली फोकस ऑन द गर्ल्स एजुकेशन सो सेति पय प्रोजेक्ट विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट सब आम देश रे लागू करा जायछि गर्ल्स वुमेन एजुकेशन ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन गर्ल्स चिल्ड्रेन जो मन सब ड्रॉप आउट होचंती रिच एक्सपीरियंस गेन इन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोजेक्ट्स इन एरा experimentation provided a valuable learning process so that is why district primary education program जोटा कि DPEP हमर चालू करा जायतला DPEP was launched during 1994 district primary education program 1994 मसीहा हमर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे भारत रे हमर DPEP प्रोग्राम चालू रहिला and extended to coverage about to 271 districts in all over the Indian states of the country. So during the end of the 19th century, 19th plan period, so सर्व शिक्षा अभियान SSA जोटा कहती सेटा मध्य चालू रहिला सर्व शिक्षा अभियान so सेति पई आम देश रे फर्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर अचीविंग that would benefit the entire country सर्व शिक्षा अभियान program with special emphasis on girls that was articulated as a preconditions for first generation basic education project and committed that is continued in DPEP तापर आउ कोन सब अछि ना नॉन फॉर्मल एजुकेशन गोटा अछि NFE scheme non formal education targeted out of children in the 6 to 14 years targeted children लक्ष्य उद्देश्य हासिल करिवा पई हमर नॉन फॉर्मल एजुकेशन जोडा का हमर इंप्लीमेंट करा जायतिला 6 रु 14 वर्ष पर्यंत पिला मानकू द स्कीम इंक्लूडेड इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1979 and 80 was operation till 2001 नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमर 2001 पर्यंत चालू रहिला जो माने ड्रॉप आउट अछंती पिला माने सेमानकु किभली शिक्षा दिया जीवो फ्री एजुकेशन 14 वर्ष पर्यंत मागणा रे संविधान अनुसार जे सेति पई हमर नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंप्लीमेंट करा गला सो एई नॉन फॉर्मल एजुकेशन रे कोन करा गला ना लेफ्ट आउट of the ambit of education the scheme reached out to these children through the decentralized management system decentralized माध्यम रे नॉन फॉर्मल एजुकेशन विभिन्न गां गंडा एवं विभिन्न खनि खादान एवं शिल्पांचल रे ए शिक्षा पद्धति जो मानकर ड्रॉप आउट होचंती पिला माने जाउना रेगुलरली से मानक पई शिक्षा व्यवस्था करा जायतला नॉन फॉर्मल हिसाब रे सो अनदर स्कीम थिला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रे ये गोटा स्कीम थिला से भली कि भली
हमर शिक्षा को वृद्धि करेवा अंडर दिस ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम इट वाज प्रपोज टू अपग्रेड प्राइमरी स्कूल मान को अपग्रेड करिवा जोटा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड हमर स्कीम इंप्लीमेंट करा जायथला ड्यूरिंग 1993-94 रे जोगुडा की हमर थिला प्राइमरी स्कूल गुडा को अपग्रेड करा गला फॉर एंड इन लो फीमेल लिटरेसी स्कूल जोगुडा को लो फीमेल लिटरेसी अंचल ब्लॉक अछि सेही अंचल रे एगडा सब इंट्रोड्यूस करा गला ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो ब्लॉक रे लो माने फीमेल लिटरेसी अछि सेही ब्लॉक रे एगडा सब इंप्लीमेंट करा गला बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल वुमेन टीचर एंड टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट हमर एगडा सब दिया गला इंस्ट्रूमेंट टूल सब दिया गला टीचिंग लर्निंग ब्लैकबोर्ड एवं अन्य सामग्री सब दिया गला से माने विभिन्न जगह रे शिक्षा प्रोवाइड करिवे एवं महिला मानन को सेठी बेसी पोस्टिंग गला दिया गला जो ब्लॉक रे कम वुमेन एजुकेशन अछि तो सेही बली आउरी सब नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन एगडा सब दिया गला तापरे हमर आउ सब शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट जोगुडा लागू होछि वर्तमान शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट एम्स एट यूनिवर्सलाइजेशन एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन रिमोट एरिड एंड सोशियो इकोनॉमिकल बैकवर्ड विलेजेस जो शिक्षा कर्मी सब प्रोजेक्ट जोटा लागू होछि जोटा रिमोट एरिया रे यूनिवर्सलाइजेशन माने शिक्षा को सार्वजनीन करबा पई हमर रिमोट एरिड एंड सोशियो इकोनॉमिकल बैकवर्ड विलेज मान करे ए शिक्षा कर्मी मान को नियुक्ति दिया गला so basic aim of SKP शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट रो कोन टीचर्स absenteeism in school located in remote and difficult areas जो रिमोट डिफिकल्टी एरिया जो गुडा अंचल अछि सेठी मैक्सिमम टाइम शिक्षक माने एब्सेंट रहंती तेणु शिक्षा कर्मी मान को सेठारे नियुक्ति दिया गला पुअर एनरोलमेंट जदि कम अछि ड्रॉप आउट रेट ऑफ चिल्ड्रन स्पेसिफिकली गर्ल्स जो अंचल रे गर्ल्स मानकर ड्रॉप आउट अधिक अछि वुमेन एजुकेशन कम अछि सेही अंचल सब शिक्षा कर्मी मान को पोस्टिंग दिया गला सो एई बडी सब विभिन्न प्रकार हमर स्कीम हाउ टू इंक्रीज द एजुकेशन सो मेकिंग गर्ल्स एजुकेशन कम्युनिटी एजेंडा टुवर्ड्स बेटर लर्निंग एई बडी सब विभिन्न प्रकार हमर स्कीम सब हम देश रे सब शिक्षा पई व्यवस्था करा गला कारण देश रे शिक्षा को सार्वजनीन करबा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सो टू अचीव जदि हम देश गोटे देश रे क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्सेस बाहरिबे ताले से देश शिक्षा रे जदि एडवांस हैला ताले हम देश रे सचेतनता वृद्धि हबो बात कंट्रोल हबो कारण हमें काली कहिथिले डिस्कशन करथिले सो किभली that we cannot compel kari pariba nai to control the bath but it depends on the awareness program of the parents how they are so aware पिता माता माने केते अवेयर अछंती ताका पिला को स्कूल को पठेबा एवं बात कंट्रोल करबा केते अवेयर अछंती जेते बेले से माने शिक्षित थिबे so such a situation as one of the aggressive situation in backward class those are living below the poverty line scheduled caste scheduled tribe people एमान को क्षेत्र रे ए सब माने सचेतनतार अभाव पाई जे पिला संख्या पिला माने ड्रॉप आउट होचंती एवं परिवार रे बर्थ रेट जेते होची डेथ रेट मध्ये सही अनुसार वृद्धि पाउची कारण अस्वास्थ्यकर परिवेश मध्य रे पिला मानको लालन पालन करा जाउची सेति पई हम जब समस्त शिक्षित थिबा तबे बेटर पेरेंट हेल्दियर चिल्ड्रन एंड हैप्पियर होम जोटा कि फैमिली प्लानिंग प्रिंसिपल को हमें मेंटेन करि परिबा बेटर पेरेंट हेल्दियर चिल्ड्रन एंड हैप्पियर होम ठीक उपयुक्त पिता माता
Hello, learners. Hello. Hello. Voice clear होची? Hello. हाँ सर ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇ କ୍ଲାସ କରିବ ବୋଲି ଫୋନ କରିଦେଲା। ଫୋନ କରିଦଉଛି ମାନେ ଆଗରୁ ତମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ନା ଯୋଉ ଦିନ କ୍ଲାସ ସେଇଦିନ ତମେ ଠିକ ଟାଇମରେ କ୍ଲାସ କରୁଛ ଫୋନ କରୁଛ, ଯୋଉଟା କି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସେ ପିଲାଟାକୁ ବିରକ୍ତ କମେଇଲି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଗରୁ କରିବ, ଲିଙ୍କ ଛଡା ହେଇଛି, କେମିତି କ୍ଲାସ କରିବ, କେମିତି କ୍ଲିକ କରିବ ଲିଙ୍କରେ, ସେତିକି ଶିଖିନା ଆଉ କଣ? ଯୁଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଦେयर ଇଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ। କ୍ଲିକ କରିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ କଲେ ତମେ ଆଗରୁ ପଚାରିବ, ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି ଫଙ୍କସନ ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ କରିଛ ସେଠି ସେଣ୍ଟର ପଚାରିବ, ବୁଝିବ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଛଡା ହେଲାଣି 7 ଦିନ, କ୍ଲାସର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲା ମତେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଫର ରୁରାଲ ଓମେନ। ଆଚ୍ଛା, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାବଦରେ ଆମକୁ ପଚାରୁଥିଲ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାବଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟରର ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। So what are the educational system, what are the different motivational program as operated by the Indian government to increase the women education. So যেহেতু সবজেক্ট আমার রহিলা না ডেভেলপমেন্ট অফ রুরাল ওমেন, গ্রামাঞ্চল মহিলা মানଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଭଳି ଡେଭଲପ କରିପାରିବା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। So long question cover, that long question means refers to the logical answer for the question. So how much thinking power we possesses as focusing towards the question. Question कौन पचारछि, मोर केते लॉजिकल आंसर क्वेश्चन की इंटरप्रेट करी देई परछ, पॉइंट वाइज अंडरलाइन करके लिखिबो हैला। ओटा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जाए, पॉइंट वाइज अंडरलाइन करके लिखिबो, ताले that will create visualization and identification for the examiner or जो माने कि इभालुएशन करूछंती खाता मा गुडिक। तेणु ता प्रति ध्यान देव लॉन्ग क्वेश्चन पाई। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोविजन इन फॉर रूरल वुमेन कौन अछि? व्हाट आर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोजीशन फॉर रूरल वुमेन? आज वी नो रूरल women particularly are ignorant, they are exploited in the society. आमे समस्ते जानि जंती। So that so far today because lack of literacy. यदि सही भली सर लिटरेसी उनका वॉइस क्लियर होना चाहिए। हां ओके हेलो सर वॉइस हेलो सर क्लियर होनी सर। सर वॉइस क्लियर क्लियर होनी होगी? सर। नहीं सर। अच्छा क्लियर ଏବେ ସେଠି ଆମର କୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ହଉଛି। हेलो अभिलिप्सा 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 वॉइस सर क्लियर होगी? ସାର୍ କ୍ଲିୟର ହଉନି। हेलो ନାଇଁ ସାର୍ କ୍ଲିୟର ହଉନି। क्लियर होनी? କ୍ରାକ୍ ହଉଛି ଭଏସ୍। ନାଇଁ ସାର୍ ହଉନି। हेलो वॉइस क्लियर होगी? हेलो हेलो ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଶୁଭା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଶୁଭିଲା ଠିକ ସେ। सुबिला ଆଜ୍ଞା ସାର୍। सुबिला क्लियर होला? हेलो हाँ ଆଜ୍ଞା सर। ଆଜ୍ଞା हेलो सर। okay so let us listen. So we should always focus on the long question. ଯଦି ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡଲି acquire କରିବା knowledge, we can write answer. We can attend any type of question.
ଯଦି ଆମେ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ଉପରେ फोकस करितबा सो फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ रूरल वुमेन महिला मानकर हेलो हां ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ସାର୍ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ସାର୍ ଭଏସ୍ ब्रेक होची ଆଜ୍ଞା होची हां हैला क्लियर हैला हेलो आगे क्लियर सर हैला हेलो आगे क्लियर सर हैला आगे सर so ଆଜ୍ଞା health ଆଜ୍ଞା is ସାର୍ a okay so health is a basic need and a fundamental right of everyone and it assumes special significance in the case of women so महिला माने को स्पेशल केस नहीं कि हेल्थ सचेतनता समाज सरकार निहाती करबा दरकार द रीजन फॉर मेनी विभिन्न प्रकार का कारण फीमेल constitute almost half of the total population of the world so secondly major responsibility of rearing of children lies with the women महिला मानकर स्वास्थ्य जदि ठीक रहइबो से होचंती जन्मदात्री से जो पिला के जन्म लालन करी ताकू द्वारा गोटे भल नागरिक शिक्षित नागरिक मार तेणु मार स्वास्थ्य जदि ठीक रहिबो सो पिला माने ऑटोमेटिकली दैट वुड हैव ए वेरी गुड इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन सो पिला के से भली सुस्थ वातावरण देई गति करिवो वॉइस क्लियर आସୁନି कौन एमती प्रॉब्लम होची हेलो सर आई थिंक आपनकर नेटवर्क इशू रहउची दैट्स व्हाई एमिति वॉइस ब्रेक होउची हां सर एबे क्लियर हैला आपनकर वॉइस एबे क्लियर हैला नेटवर्क ठीक अछि कारण हम टावर मु जोटी पढौची हेलो हां सर एबे टावर वॉइस पूरा क्लियर है हां सर ओके सो सेकेंडली major responsibility bearing and rearing children lies with the women and third health status directly influence the health and well-being of the children मार जदि उत्तम स्वास्थ्य थिबो तार इंपैक्ट पडिबो तार चिल्ड्रन ऊपर तार पिला मानक ऊपर so that is why nutrition is a science of nursing of the body we should ignore the malnutrition जेबडी नगड़ा गोटे जगह malnutrition अपपुष्टि रे से अंचलवासी आदिवासी हरिजनवासी माने से माने अपपुष्टि रे शिकार हेउचंती स्वाधीनतार एते वर्ष परे मध्य ए भली माल न्यूट्रिशन आम देश रे देखा जाउची एटा गोटा अति दुख परितापर विषय सो व्हाई डू यू नीड फूड परफॉर्म्स थ्री मेन फंक्शन प्रोवाइडिंग एनर्जी repairing the body maintaining growth and protecting the body against disease so that is why we require per day 13 vitamin 11 minerals लिप्सा वॉइस क्लियर होची तो हेलो लिप्सा हां सर एबे वॉइस पूरा क्लियर अछि यू आर ऑडिबल हां लेट अस लिसन सो जने व्यक्ति एक्चुअली न्यूट्रिशन हिसाब रे per day we require 13 vitamin 11 minerals दैनिक जने उत्तम स्वास्थ्य पाई उत्तम मस्तिष्क पाई 13टा विटामिन 11टा मिनरल्स हमको दरकार पड़ी थाए आमे विभिन्न प्रकार खाद्य को मिसई यदि आमे खाद्य ग्रहण करिबा ताहाले आमे 13टा विटामिन 11 मिनरल्स हम पाई परिबा किंतु बैलेंस न्यूट्रिशन आमे पाई न थाउ जोथि पाई हेल्थ वीक मींस मेमोरी वीक so desire to work and willingness to work decline backwardness हे जाउची काम करिबार इच्छा बा काम करिबार आग्रह बा पाठ पढिबार इच्छा पाठ पढिबार आग्रह हमर धीरे धीरे कमी जाउची सो फूड फॉर एनर्जी फूड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस फूड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज ये सब हमर खाद्य ऊपर डिपेंड करछि न्यूट्रिशन क्वालिटेटिव फूड्स so that is why women's during pregnancy and lactation period the females are expected to have additional intake of calories महिला मानकर प्रेगनेंसी एवं लैक्टेशन पीरियड रे सेमानकर एडिशनल इंटेक ऑफ कैलोरी फूड दरकार क्वालिटेटिव प्रोटीन एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड
and for her own health status तार निजर पिलाटी एवं तार निजर स्वास्थ्य माटीर जदि ठीक ठाक रहिबो पिलाटी उत्तम स्वास्थ्य नेगिरी वृद्धि गढिबो एवं तार मेंटली मेमोरी मध्ये स्ट्रांग हेगिरी ग्रोथ हबो तेनु हमकु प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट फॉर द चिल्ड्रन and for her own health status that nutrition vitamin is very essential inevitable for the mother. However, ignorance along the with poverty often leads to inadequate dietary intake during the periods of pregnancy and lactation. जोठी poverty illiterate जो अंचल रे अधिका अछि दारिद्र्य सीमा रेखा तले अधिका लोक बसवास करूचंती एवं जोठी निरक्षरता साक्षरता नहीं से अंचल रे बैलेंस न्यूट्रिशन कोन बा पाइबे से माने बैलेंस न्यूट्रिशन बाबद से माने कोन जानि चंती कारण they are belongs to illiterate category groups of people तो जो माने illiterate समाज बा पुष्टिकर खाद्य बा आमे कोथरु पाई परिबा कोन पई दरकार पुष्टिकर खाद्य से माने न जानि थिबे अपपुष्टिर शिकार हेबे सेति पई एजुकेशन निहाती दरकार so that is why this results in low health status gynecologically and related to elements and among the mothers different disease and problem will automatically arise low and inadequate nutrition status among females often results in high rates of infant mortality शिशु मृत्यु हार कहीं की वृद्धि आगे होउथला एबे टिके अवश्य कमी गलानी सचेतनता एवं शिक्षित गोष्ठी लोक माने बेसी बाहरिलेनी लिटरेसी परसेंट इंक्रीज करिवारु स्वास्थ्य सचेतनता लोक माने हेलेनी इत्यादि तेणु जेभली स्वास्थ्य सचेतनता कोविड-19 को आमे भय करिगिरी सब जेभली घरे मुखा बांधिगिरी घरे थकिले लुचिले कारण आमे स्वास्थ्य सचेतनता अछु दिस इज वन साइटेड ए ब्यूटीफुल एग्जांपल समस्त केही का सहित मिसिले निजर बंधु बांधव सब घर मनुष्य त्याग करी घर कणर आमे सब लुचि जंती 2 वर्ष आला बिकॉज़ ड्यू टू कोविड-19 so that is why वर्तमान जुग रे आमे समस्त स्वास्थ्य सचेतनता हे गेले तेनु जने प्रेग्नेंसी लेडी बा फीमेल को ताको ठीक भाव रे खाद्य बा न्यूट्रिशन विटामिन ही दबा उचित सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट दबा उचित कारण से जे बडी उत्तम स्वास्थ्य मेंटेन करिवो आ पिलाटी मध्ये से बडी गडी बढिवो सो लो लेवल ऑफ lack of awareness केतेबळे lack of awareness होउची ना low levels of literacy and lack of awareness regarding health and nutrition are important causes of prevailing health situation so that is why poverty as well as ignorance contributed to undernutrition poverty दारिद्रता एवं ignorance जोटा कि leads to undernutrition and malnutrition among the many rural women दारिद्र्य गां गंडार महिला माने दारिद्र्य बा कषाघात रे जर्जरित होइतांती से माने पुराना कालिया रीति प्रथा रे बाउंड होई के रहितांती गां गंडार पुराना कालिया रीति प्रथा ट्रेडिशन सोशल कस्टम को से माने बेसी प्रायोरिटी देइतांती तेनु करी समानकर स्वास्थ्य प्रति केही गुरुत्व देइ न थांती वर्तमान to some extent it has been changed the society and village rural area changed so many times women and children suffer from malnutrition not because of the lack of money or foods but due to ignorance for the right kind of food needed for the proper growth and functioning of the body शरीर उत्तम स्वास्थ्य गठन पाई हमकु प्रॉपर फंक्शनिंग पाई हमकु प्रकृत रे बैलेंस न्यूट्रिशन इज इनएविटेबल सो महिला सचेतनता उपरे सेटा डिपेंड करी थाए सो लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जोटा हमर अछि शासन तरफ प्रशासन बा सरकार के तरफ ICDS as one of its components offer nutrition and health education to females in the age group of 14 to 45 years however the actual implementation of the quality is a big question of mark so हमर ICDS अछि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सरकार के तरफ अछि चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जोडा कि न्यूट्रिशन पर पिला मानकु महिला मानकु सब सचेतनता करा दउछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन
status is the indicator of a life expectancy. आमे केते वर्ष पर्यंत बंची परिबा लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक कहा जाए जदि आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बा बंचीबार मानदंड थिला 60 इयर्स वर्तमान ता बढ़िलाय हम देश रे शिशु मृत्यु हार आगे जो भली हेउथिला जेति कि शिशु जन्म नेउथिले सेति कि मध्य मृत्युवरण होतला ब्रिटिश समय रे कारण सचेतनतार अभाव महामारी व्यापुथिला लोक माने बैलेंस न्यूट्रिशन पाउ नथिले एपटर ब्रिटिश सरकार के द्वारा लोक माने नैराश हताश जंत्रणा रे गति करूथिले तेणु वर्तमान सिचुएशन रेडिकल चेंज नाउ इट इज आमे सचेतन हलेनी हाउ टू मेंटेन द फैमिली प्लानिंग एंड how to maintain the sex ratio, balanced sex ratio, male female. केरल गोटे स्टेट आम देश रे गोटे राज्य जोटा कि डेवलप्ड स्टेट भाव में परिगणित बेटर ऑफ इफ विल कंपेयर विथ पंजाब एंड केरल फॉर एग्जांपल which state is better off and which state is worse off? Punjab and we know Punjab is a rich state than Kerala, but Punjab is not belongs to achieving the 100% literacy, whereas Kerala achieving so far today 100% literacy. But from the point of view capital resources, Kerala is lower than the Punjab. But from the economic point of view, that Kerala is better off than Punjab. Punjab रे हमें जानुचंती पंजाब गोटे धनी राज्य किंतु there is disparities in literacy, in income and wealth, आय संपद एवं परसेंटेज ऑफ लिटरेसी ये सब दृष्टि बैलेंस नहीं होय तो किछि लोकन पाखरे प्रचुर धन थाई पारे किछि बहुत मैक्सिमम लोक शिल्पपति थाई पारंती but 100% literacy achieve करेंगे. But if you compare with Kerala, it is better off than Punjab. So there is equitable distribution of health and nutrition, and because of the high literacy rate, so more awareness prevails in Kerala. So एभली विभिन्न प्रकार रोग मध्य से अटैक होती लो वेट एंड हाइट एनीमिया मैटरनल मोर्टालिटी ये सब विभिन्न प्रकार महिला माने सब माने सफर होता तो से गुड़िक सब रोकवाई आमको कौन करने पड़ो ना न्यूट्रिशन बैलेंस न्यूट्रिशन आम फोकस करने पड़ो पॉलिसी प्रोग्राम उपर ध्यान दब लंग क्वेश्चन पॉलिसी प्रोग्राम्स नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी सब कौन थिला हेल्थ पॉलिसी ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान एगरा सब हमर लंग क्वेश्चन अंतर्भुक्त होउची तापरे पॉलिसी प्रोग्राम माने एनहांसमेंट ऑफ वुमेन हेल्थ स्टेटस ये सब कौन आधार सब कौन सब प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम न्यूट्रिशन हेल्थ पॉलिसी ड्यूरिंग 1983 फॉलोइंग रिकमेंडेशंस लाइक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR and Indian Council of Social Science Research ICSSR joint commit to health promotion करिवा पई उभय ICMR and ICSSR पॉलिसी सब कमिटी माध्यम रे पॉलिसी इंप्लीमेंट करथिले the women health status पई the role of men in family planning was overlooked other health needs of women were ignored तेणु ये सब ऊपर हमर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एमान सब जॉइंट मीटिंग रे सब महिला मानक स्वास्थ्य सुरक्षा पाई मध्ये अनेक चेष्टा करा जायथला विभिन्न पॉलिसी प्रोग्राम जो लंग क्वेश्चन पचारुथिला एगरा सब इंक्लूड करा जायथला सो मोस्टली द करंट अफेयर्स नाउअडेज दैट empowerment of rural women that one unit included in your syllabus that is empowerment rural women गाँ गंडार ग्रामां महिला मानकर सशक्तिकरण
हेलो वॉइस क्लियर होची तो हेलो हाँ सर मझे गोटा पिला फोन कर देला से एमती सब लॉस माने अछंती स्टूडेंट माने माने एजेड पिला मानकर एजेड हेलेनी किंतु सेमानकर गोटा कॉमन सेंस नाही जे हमको प्रोग्राम दिहलानी विभिन्न जॉब रे मध्ये अछंती लर्नर्स माने किंतु सेमानकर सचेतन ए पुणी बारंबार रिपीटेडली से फोन करू जे क्लास चलथिबो कोन करथिबो प्रोग्राम दिहलानी एई भली सब इग्नोर पिला माने बड हैरान करछन कोन करे वॉइस क्लियर होची हेलो Again, sir. okay so let us listen so empowerment of rural women the role that women play different in any given society and their situation is determined by the legislature legislation द्वारा तांकर सिचुएशन को डिटरमाइन करा जाता है रिलीजियस नॉर्म्स इकोनॉमिक स्टेटस और क्लास कल्चरल वैल्यूज ethnicity and the types of productivity activity of their country community and household women are usually responsible for domestic work and the care of children family health cooking providing food and other household services महिला मानकर एते सब कर्म आम समाज आम परिवार पई आम देश पई अछि चिंता कर प्रत्येक परिवार रे महिला मानकर एई भली गुरुत्वपूर्ण भूमिका अछि महिला माने को कम्युनिटी रो को एथनिसिटी रो को ट्रेडिशन रो को सोशल ग्रुप रो निज निज सोशल ग्रुप निज निज रिलीजियस ग्रुप अनुसार दे आर वेल अटैच्ड फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटी पई दैनंदिन कार्यकलाप पई विभिन्न कम्युनिटी रो गोष्ठी रो परिवार बा समाज रे महिला मानकर दायित्व नेस्त होइछि हला तेणु करी सेमानकर जेउ कम्युनिटी रे होंतु ना काहे की घरर रोषेई बास कतरु घरर मेंबर मानकु खाद्य दबा सहित बाहर काम धंदा एवं बिल बाड़ी बगीचा ता सहित अलाइड एक्टिविटीज बहुत महिला अछंती जो माने की अलाइड एक्टिविटी रे मैक्सिमम इनकम करूचंती एसएससी ग्रुप गठन करिचंती अलाइड ग्रुप कहले अलाइड एक्टिविटीज कहले बा सहायक कृषि सो प्राइमरी ऑक्युपेशन हमरा कोटा कल्टिवेशन वाला धान चाष करिबा गहम चाष करिबा वेजिटेबल्स प्रोडक्शन करिबा व्हीट प्रोडक्शन करिबा एटा होचे हमर प्राइमरी ऑक्युपेशन अलाइड एक्टिविटीज कहले दैट इज दैट लाइक डायरी फार्मिंग गोटेरी पिगेरी फिशरी एंड लाइक अदर फार्मिंग सिस्टम गोपालन करिबा मेष पालन करिबा छेली पालन करिबा कुकुड़ा बतक रखिबा एगडा सब होचे अलाइड एक्टिविटी थ्रू आउट ईयर वर्ष तमाम आय जोगई थाए अलाइड चाष बा सहायक कृषि द्वारा वर्ष तमाम आय परिवार रे महिला माने पाई थांती सपोज हमें जानि चंती जे इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ मॉनसून हमें जानि चंती भारतीय हमर चाषबास होची भारतीय कृषि होची मौसम वायुर गोटा जुआ खेल भलिया जदि भल मौसम प्रभावित हला ताले चाषी माने प्रचुर धान बा शस्य उत्पादन करि परिबे जदि चाषी फेलुअर हला ताले चाषी आत्महत्या वर्तमान जोटा हमें देखिबा पई पाउछ सो एटा कहै छै गैम्बलिंग कारण वर्तमान परिवेश प्रदूषण हेतु ठीक समय मौसम वायु आसु नै ठीक वर्षा हो नै लघुचाप हेले वर्षा हो नल हो नै तेणु करी जदि से चाषी माने घरर महिला सदस्य माने अन्यान्य सहायक कृषि रे जदि इन्वॉल्व हेबे वर्ष तमाम इनकम करिवे वर्ष तमाम कोन घरे दिटा गो पालन करिबा छेली पालन करिबा कुकुड़ा चाष करिबा बतक पालन करिबा सो महिला माने वर्तमान देखिबा पई हम मिलुछनी जे अलाइड एक्टिविटी रे थ्रू आउट ईयर वर्ष तमाम आय करछन सो दैट इज empowerment of rural women nowadays in each of these areas reproduction production and community women have often been adversely affected by the development process there is a wide gap between women high and economic participation and their low political and social power and development strategy have usually taken
the needs of the most vocal and political activity are their starting point. मूलरू after the departure of the Britishers महिला मानक सेते स्कोप दिया जाय नथला किंतु धीरे धीरे after the introduction of a पंचायत राज system PRI जे पार्ट आई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत गोटे जनमंगल राष्ट्र बोली कहउची जोथरे कि महिला मानकू हमर पंचायत राज सिस्टम रे वो अधिक इन्वॉल्वमेंट करा गला जो माने सचेतनता सृष्टि करि परिबे उपयुक्त नेता टिए बाछि परिबे एवं समाने महिला माने गणतंत्र ऊपर सचेतनता ही परिबे सो महिला माने कोन करबा उचित को भली तांको दबा उचित स्कोप एक्सेस टू एंड कंट्रोल ओवर प्राइवेट एसेट एंड रिसोर्सेस बेसरकारी रिसोर्सेस एसेट ऊपर महिला मानकर एक्सेस रहिबा दरकार घरे हमर सपोज मालिकाना अछि संबळ अछि विशेष करी पुरुष मानका कंट्रोल करि थांती महिला मानकु स्कोप दिया नै थाय सेनु सेमानकर फोरसाइटनेस बढिबो जति सेमानकु इन्वॉल्वमेंट करा दिबो सो जदि हमर बड़ बड़ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल दउछ बड़ बड़ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन सब गुरा अछि सो देयर इज वर्टिकल कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल विभिन्न प्रकार माने सूचना गुडी को इंफॉर्मेशन हाउ टू कम्युनिकेट जे बेले बेले हमर बड़ बड़ इंडस्ट्री माने का स्ट्राइक लॉकआउट काहे की देखा जाय ना तळ लेवल कर्मचारी माने माने सचेतनता न थांती व्हाट आर द लॉज इंप्लीमेंटेड एट द टॉप लेवल सेति पई जदि ग्रासरूट लेवल कर्मचारी मानकू इन्वॉल्व करा जाए ताहले स्ट्राइक लॉकआउट वी कैन इग्नोर इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और इन माइंस ऑर्गेनाइजेशन हमें जानि बड़ बड़ इंडस्ट्री हो बा मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो माइंस ऑर्गेनाइजेशन हो तळ कर्मचारी माने जो नुआ आईनटा पास हुए से माने जानि पारंती नाही जदि सेमानकु इन्वॉल्वमेंट करा जिवो ताहले स्ट्राइक लॉकआउट कैन बी इग्नोर्ड तो महिला माने ठीक सही बोली महिला मानकु माने ठीक से ट्रीटमेंट करा जाए नाही नथिबागु से माने इग्नोरेंट रहंती जा फल रे विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम सृष्टि हेई था सो एक्सेस टू पब्लिक रिसोर्सेस प्रति सेमानकर एक्सेस रहिबा दरकार थर्ड वी कैन फोकस ऑन द कंट्रोल ओवर देयर लेबर एंड इनकम फोर्थ रा में कहि परिबा कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज तांका शरीर प्रति कंट्रोल रहिबा दरकार कंट्रोल ओवर फिजिकल मोबिलिटी access to and control over political spaces politically they should involve and access and control over intangible resources like information influence etc position in the law and access to legal structure and redress ये सब प्रति महिला मानकर acquainted होबा दरकार so then the difference between male and female we can avoid all have equal right and all are equal before the law and having equal rights as we are a citizen of democratic form of government social construction of gender केमति हे परिबो एगडा सब हमें लॉन्ग क्वेश्चन ने इंक्लूड कर परिबा महिला वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स गुडे लॉन्ग क्वेश्चन ने हमें विभिन्न प्रकार फैक्टर लिखि परिबा social construction gender like society uses its socialization process of construction gender society has also socialization agent through which the above is done religion family and media etc and therefore to restructure or reconstruct gender role we have to address and culture and society in general change can be realized but it has to come from within and gradually आम भितरु ये चेंज टा आमे मान ही चिंता करिबा दरकार यदि प्रत्येक परिवार रे प्रत्येक समाज रे प्रत्येक कम्युनिटी रे ये चेंज गुडी का आसीबो ताहले धीरे धीरे समग्र देश रे इट विल हैव ए वेरी गुड इंपैक्ट सो दैट इज व्हाई एम्पावरमेंट प्रोसेस हमें किभली एम्पावरमेंट करि परिबा having control over gaining further control having say and being listened being able to define create from women perspective capacity building and skill development training for rural women
and scope for involvement in different policy making, and scope must be availed to the women and in political empowerment. प्रत्येक क्षेत्र रे अवश्य political empowerment करा गलानी 1/3 must be reserved as reveals in constitution and amendment as already held. So women empowerment framework reconceptualized the development objective of a gender responsive program rather than focusing on economic objectives such as enabling them women to be more productive or use their labor time more effectively, and there if women empowerment will be held, so that their desire to work and willingness to work will be held possible, and the country will economically become advanced, and the per capita income of the citizen increase simultaneously. That will have a very good impact to hike the national income. So power within, power to, power with. The types of the power. महिला मान पाखरे पावर विदिन तांका पाखरे शक्ति अछि तांको तांका पाखरे थिबा शक्ति को वी कैन यूटिलाइज प्रॉपर्ली एंड पावर विथ. सो साइकोलॉजिकल पावर विभिन्न प्रकार फॉर्म्स ऑफ पावर सब अछि महिला मान पाखरे. साइकोलॉजिकल पावर, सोशियो इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर. महिला मान विभिन्न प्रकार स्टेज, वेलफेयर स्टेज मध्य अछि. वेलफेयर स्टेज, एक्सेस स्टेज, पार्टिसिपेशन स्टेज, concentration stage, and that is control stage, so that we can grow and develop, and women empowerment can help fruitful. Human development report that states empowerment is described as the people fully participation in decision making process in the shape of their lives. So प्रत्येक क्षेत्र रे यदि महिला मान को इन्वॉल्वमेंट करा जिवो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करा जिवो, सोशल एम्पावरमेंट करा जिवो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करा जिवो, ताहाले महिला माने डेवलपमेंट हे परिबो एवं विकास हे परिबो. लाइक चेंज इन टाइम, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड करिवो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. जोरा हम सब डिस्कशन करले. परसेंटेज ऑफ सीट, सपोज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, परसेंटेज ऑफ सीट हेल्ड बाय द वुमेन in a local council, percentage of women in decision making position in local government, percentage of women in local civil services. Local civil services केते महिला माने जॉइन करछन्ती. Percentage of women eligible for men to who votes. Percentage of women in senior and junior decision making position within unions. Percentage of unions members who are women and men. एवं सब विभिन्न प्रकार पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रे इंक्लूड करा जाय था, सो दैट वी कैन मेक मोर एम्पावरमेंट फॉर द वुमेन. सो एवं हमें विभिन्न प्रकार लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर यदि फोकस करि परिबा ताले हमें डेवलप हमर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली परीक्षा खातर हमें रिप्रेजेंट करि परिबा. यदि लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर हमें फोकस न करिबा ताले अटेंड करि परिबा नाही. So empowerment of rural women policy and program, कौन सो policy program सब हम देश रे implement अछि. The preamble to secure all citizens. Preamble कौन कहउछि? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic for government. हमर preamble कहउछि जे भारत होछि आमे सब पवित्र सहकार्य घोषणा करूछु जे आमे सब भारतीय गणतंत्र, साधारणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद राष्ट्र आदिवासी होतु. ये सब केते पवित्र कथा हमर संविधान रे लिखित अछि, कॉन्स्टिट्यूशन रो संविधान बा प्रियम्बल रे. सो दैट टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, सेठी गोटे टाइटल अछि, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. समस्त नागरिक मानकर सिक्योरिटी रहबा दरकार. कोनटा सिक्योरिटी वास्तविक क्षेत्र हम देखिया पे गले स्वाधीनतार एते वर्ष आमे चाखिले स्वाधीनता कौन आम नागरिक मानक सिक्योरिटी अछि ये करता वास्तविक कहबा कथा डिस्कशन करबा कथा प्रैक्टिकली किछि सिक्योरिटी नै, बट इट इज रिटन ब्यूटीफुल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, समस्तिंकर इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल
fraternity assuring dignity and unity of the nation जहाँ practically आम जहाँ feel कर so आमर गोटे article अच्छी 14 confers equal rights and opportunity on men and women in political, economic and social spheres. महिला मानकर आमर 14 article कहूची both male and female मानकर समान अधिकार अछि कोथरे political and economic social sphere रे समान अधिकार अछि evolution of policy for women on women कोन convention India has ratified various international convention human rights instrument and secure equal rights for women. Key among the ratification of the convention of elimination of all forms of discrimination against women. जिते प्रकार discrimination अच्छी एगुड़ी सब हमको ignore करना में पड़िगो. Convention on the right of a child, Convention on civil and political rights, Convention on economic and social cultural rights. ये सब महिला मानकर आमर संविधान रे सब लिखित अछि ये सब महिला मानक पई सिक्युरिटी जोगै देथा एवं कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया महिला मानकर गोटे कमिटी अछि वुमेन स्टेटस तो सही भली 1975 रे इंटरनेशनल वुमेन ईयर डे जोटा पालन करा जाउची एक्शन पॉइंट्स नेशनल प्लान एंड एक्शन फॉर वुमेन 1976 रे वाज फॉर्मुलेटेड बाय द then डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विभिन्न प्रकार सब कमिटी महिला मानकर अछि सचेतनता पई वुमेन एम्पावरमेंट पई विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल वुमेन ये मध्य 1978 रे गठन करा गेल अच्छा एग्रीमेंट बिटवीन द मिनिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन द नेशनल कमिटी रोल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन in agriculture and rural development during 1980 was submitted महिला मानकर कृषि एवं सहायक कृषि विकास क्षेत्र रे अनेक भूमिका अछि प्रत्येक घरे महिला माने गाई रखिथिबे कुकुड़ा पालन करथिबे एमान सब अलाइड एक्टिविटी रे बहुत जोग अछि अर्थनैतिक विकास परिवार डेवलपमेंट पाई सो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये गुडी सब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन सब गुडी का महिला मानक पई एम्पावरमेंट पई सब करा रे सो नेशनल पॉलिसी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग 2001 आई वुड नो पॉलिसी इंप्लीमेंट करछंती as of the main objective of the policy is to bring about the advancement and development empowerment of women and to eliminate all forms of discrimination against women and to ensure their active participation in all spheres of life and activity. प्रत्येक तांकर जीवन शैली प्रत्येक क्षेत्र रे सब प्रकार एक्टिव पार्टिसिपेशन सहायता जोगाई दे बोली सरकार हमर प्रशासन रे दायित्व अछि. The themes in issue covered like economic empowerment, social empowerment include health, education and violence against women, women and decision making, women and media, women and science and technology. प्रत्येक क्षेत्र रे नेशनल पॉलिसी ऑन एम्पावरमेंट रखा जाय छै महिला मानक पई. सो हाउ कोन अछि क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट थ्रू पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन. हाउ कोन अछि फंडामेंटल राइट फ्रीडम बाय वुमेन ऑन इक्वल बेसिस विथ मेन इन ऑल स्फीयर्स. All spheres कहले political, economic and social. So third रे परिबो equal access to participation and decision making of women in social, political and economic life of the nation. हमर जो असेंबली हमर स्टेट असेंबली हो पार्लियामेंट हो महिला मानकर जति की रिजर्वेशन अछि 1/3 सेमानकर प्रत्येक कमिटी हमर जते प्रकार सब कमिटी अछि कैबिनेट कमिटी हो अन्य कमिटी थाउ प्रत्येक कमिटी से मानको मेंबर रखा जाय छै 1/3 एवं सेमाने मध्य डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन लेउछन्ति. Strengthening legal system aimed at elimination of all forms of discrimination against women. आईन को दृढ़ करिबा महिला मानकर अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होची सेठी आईन हमको सहायता दबो महिला मानकु. तापर मेन स्ट्रीमिंग
changing social attitude and community practice practiced by active participation and involvement of both men and women. जो ऑर्गेनाइजेशन में महिला पुरुष उभय कर्म क्षेत्र में पार्टिसिपेशन थिबे बा नियुक्ति पाइथिबे निश्चित भाव में सेठी महिला सशक्तिकरण ही करला बोली हमें कहि परिबा आजिकली प्राय प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन हो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर हो बा प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियर सेक्टर विशेष करी टर्शियर सेक्टर रे महिला मानकर जथेष्ट एम्पावरमेंट हैला टर्शियर सेक्टर कहले जोटा सर्विस सेक्टर को आ जाउची स्पेसिफिकली इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे सूचना प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र रे महिला मानकर जथेष्ट परिमाण रे इन्वॉल्वमेंट आसी गलानी कंप्यूटर ऑपरेट करिबा विभिन्न बैंक बा अन्य हमर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जुडिशियरी डिपार्टमेंट हो पुलिस डिपार्टमेंट हो बा लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट हो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो प्रत्येक एठी देखिबे प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन महिला मानकर इन्वॉल्वमेंट जथेष्ट वृद्धि पाइले सो एही बडी मेन स्ट्रीमिंग जेंडर प्रोसेसिंग building and strengthening partnership with the civil society particularly women organization विभिन्न प्रकार महिला मानकर ऑर्गेनाइजेशन मध्ये अछि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लाइक डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सो विभिन्न प्रकार महिला मानक पई सरकारी स्तर रे डिपार्टमेंट मध्ये खोला जायछि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय महिला कोष नेशनल कमिशन ऑफ वुमेन ए सब महिला मानक पई विभिन्न प्रकार कमिटी ऑर्गेनाइजेशन मध्ये सेटअप होइछि महिला सशक्तिकरण पाए प्रोग्राम ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से बड़ी अछि एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन वुमेन एंड माइक्रो क्रेडिट अछि कोन शेयर शक्ति प्रोजेक्ट एसएचजी ग्रुप स्वयं सिद्ध ये सब ऊपर लिखिबो पिला माने एसएचजी ग्रुप विभिन्न प्रकार एसएचजी की बड़ी से मानकर एम्पावरमेंट करा जीवो से मानकू स्वावलंबन करा जीवो करा जाय परिबो वुमेन इन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री की बड़ी इन्वॉल्वमेंट से माने लोन पाई परिबे कॉटेज इंडस्ट्री हमर विभिन्न प्रकार रूरल बेल्ट रे विभिन्न प्रकार विलेज इंडस्ट्री अछि हैंडीक्राफ्ट सेरिकल्चर एक्वाकल्चर कॉटेज इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट एही बडू हस्तकर्म विभिन्न प्रकार कर्म सब महिला मानक पई करा जायछि सेति पई से माने आर्थिक सहायता मध्ये सरकार तरफ रु बैंक रु पाई परिबे एगडा सब मध्ये लिखिबो वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड लैंड मैनेजमेंट रे बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका अछि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इंदिरा आवास योजना वुमेन कंपोनेंट्स इन मिनिस्ट्री इन रूरल डेवलपमेंट ए बडी सब विभिन्न प्रकार प्रोग्राम अछि प्रोग्राम्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट रे मध्ये बहुत प्रकार इंडिया नॉट ओनली एन गारंटी जेंडर इक्वालिटी बाय कन्फरिंग इक्वल राइट्स ऑन बोथ women and men and prohibits discrimination on the grounds of sex so that adopting measures to take into account reproductive rights of women to enable them to exercise their reproductive policies initiating intervention at the macroeconomic level to amend existing legislation to improve women access to productive asset and resources विशेष करी अन्य स्टेट रे आंध्र प्रदेश रे महिला मानकर पुरुष मानकर जथेष्ट अधिक परिमाण समय कृषि क्षेत्र रे बितै थांती जोटि के समानकर इनकम पर कैपिटा इनकम वी नो दैट द पंजाब दैट इज आंध्र प्रदेश इज दैट इकोनॉमिकली मोर एडवांस्ड देन ओडिशा बिकॉज़ देयर वुमेन आर मोस्टली इन्वॉल्वड इन डिफरेंट एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर हो सेकेंडरी सेक्टर हो टर्शियर सेक्टर हो maximum women in that in primary sector they are involved primary sector is culture animal husbandry हेलो
ଦେଲୁ ମୋ ନାଇଁ ଟିଚର Okay, indication पळी आसिलानी. Today I completed the unit 1 and we proceed that MRD 101 2 को आसंता काल थरु पुणी पढेबा हला ठीक टाइम रे टिक आसी के जॉइन करो आ जो माने सब जॉइन करिना मझिरे मेसेज बॉक्स रे क्लिक करके सेठी निजर रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि दे दियो आ परीक्षा जो कोविड रे फर्स्ट ईयर परीक्षा गडाक जे जनवरी 15 पर स्टार्ट हबो बुझि परलो हेलो सर सुमन सर असाइनमेंट केमति से कोन आज्ञा सर